Okay, welcome again. Today's topic of discussion is thin oxide growth. As noted earlier, the structure of the oxide very close to the silicon oxide interface and the oxidation process itself both involve uncertainties. सिलिकॉन ऑक्साइड इंटरफेस की बात करें या फिर स्ट्रक्चर की बात करें ऑक्साइड की, दोनों के दोनों जो हैं थ्योरीज के पीछे अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है। कैसी अनसर्टेनिटीज की वो पार्टिकल जो है वो चार्ज होंगे, न्यूट्रल होंगे, कितना टेम्परेचर होगा, कितना प्रेशर होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी, ये सारी चीजें। Our understanding is further complicated by the observation of an initial rapid oxidation for the case of dry oxide growth, which causes the linear portion of the oxide growth versus time curve to extrapolate to an initial thickness of about 200 angstrom. ड्राई ऑक्साइड ग्रोथ की बात कर रहे हैं। विथ एडवांस्ड मॉस स्ट्रक्चर्स द एबिलिटी टू ग्रो विथ रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स थिन 300 एंगस्ट्रॉम से नीचे की वैल्यू यूनिफॉर्म हाई क्वालिटी गेट ऑक्साइड हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। In other application, thin pad oxides of thicknesses between 50 to 1000 angstroms have been used routinely under masking nitrides layers to prevent stress-induced defects in the underlying silicon. The discussion in this section concentrates on the techniques and the properties of the thin oxides. ठीक है, और थिन ऑक्साइड्स का जो 50 से 1000 एंगस्ट्रॉम हैव बीन रूटीनली जो है मास्किंग होती है इसकी, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो 50 एंगस्ट्रॉम से नीचे की बात करेंगे। द टेक्नोलॉजी फॉर द थिन ऑक्साइड ग्रोथ इज स्टिल इमर्जिंग विद अ वैरायटी ऑफ techniques being used. Aside from the kinetics of oxide growth, other properties studied typically include refractive index, oxide composition, etching rate, density, susceptibility to the pinholes, stress, and dielectric breakdown. From a practical point of view, thin oxide growth must be slow enough to obtain uniformity and reproducibility. Various growth techniques include dry oxidation with HCl, sequential oxidation. इतने सारे techniques जो है हम लोग use कर सकते हैं, different temperature and ambience, wet oxidation, reduced pressure techniques with even high pressure, low temperature oxidations, high pressure, low temperature oxidations. The oxidation rate will of course be lower at lower temperatures and reduced pressures. Ultra thin oxides जो कि जिसकी range of 50 angstrom से नीचे have been produced using hot nitric acid, boiling water and air at room temperature. For whatever technique is chosen, the desired properties must be obtained. ठीक है, in discussing the techniques used and properties obtained, it should be emphasized that thin oxide growth is influenced by the cleaning techniques used and the purity of the gases used. कितना प्योर है वो गैस जो नाइट्रिक एसिड आप यूज कर रहे हैं वो, और ऑक्साइड की ग्रोथ जो है वो क्लीनिंग टेक्निक कैसे यूज की गई। फिगर 4 shows an example of thin oxide growth versus oxidation time in dry oxygen. ऑक्सीडेशन टाइम, कितना टाइम लग रहा है आपको, और ऑक्साइड की क्या थिकनेस है, उसके बीच में ये शो किया गया। और ये टेम्परेचर देखिए 780 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 893 पे और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कम टाइम लगेगा अगर आप टेम्परेचर की रेंज ज्यादा रखते हैं और आपकी थिकनेस जो है वो भी हाई रहेगी। This data demonstrates that a set of time temperature conditions can be chosen to grow thin oxides compatible with the reasonable throughput. ठीक है, processing conditions have an important impact on oxide properties. For example, oxide densities increases as the oxidation temperature is reduced. अगर आप टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे तो ऑक्साइड डेंसिटी जो है इंक्रीज होगी। Additionally, HCl ambients have typically been used to passive ionic sodium, improve the breakdown voltage and getter impurities and defects in the silicon. ठीक है, this passivation effect only begins to occur in the higher temperature range. A two-step process sequence has been devised in which a uniform reproducible oxide of small defect density is formed at a moderate temperature using a dry O2 HCl ambient. The second step consists of a heat treatment in nitrogen, oxygen and HCl at 1150 degrees centigrade to provide passivation and to bring the oxide thickness to the desired level. Such a processing scheme takes advantage of beneficial effects occurring in both the lower and higher temperature ranges.
ठीक है, ये ध्यान में रखना कि HCl का एम्बियंट यूज करेंगे तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 1150 डिग्री सेंटीग्रेड आपको रखना पड़ेगा उस वैल्यू को। ये मॉडरेट टेम्परेचर, इससे इसके आसपास ही रहना चाहिए। क्या एडवांटेज है इसका, बेनिफिशियल इफेक्ट्स है जो बोथ लोअर एंड हायर टेम्परेचर रेंज पे ये काम कर लेता है। ठीक है, reduced pressure oxidation offers an attractive way of growing thin oxides in a controlled manner. Oxides between 30 to 140 degree 140 angstrom thick have been grown in CVD, chemical vapor deposition reactor, at 900 to 1000 degree centigrade using oxygen at a pressure of 0.25 to 2.0 torr. The observed kinetics are parabolic nature का होता है, and the rate constant agree with values extrapolated from atmospheric pressure. Oxides obtained by this technique each at the same rate as dry oxides obtained at 950 degree centigrade and 1 atmospheric pressure. The equal each rate indicate a similar oxide composition and a structure between two oxides. The intrinsic breakdown fields are high and distributed over a narrow range. All indications are that the reduced pressure oxides are very uniform, homogeneous and similar to thicker oxides prepared at the atmospheric pressure. ठीक है, क्या होमोजीनियस, यूनिफॉर्म, थिकर ऑक्साइड के जैसे उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, थिन ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। एज अ फाइनल एग्जांपल ऑफ थिन ऑक्साइड ग्रोथ वी कंसीडर द यूज ऑफ हाई प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम ऑक्सीडेशन at 10 atmospheric pressure 750 degree centigrade, a 300 angstrom thick oxide can be grown in 30 minutes. Obviously, the time, temperature and pressure can be changed to vary the thickness. Such a technique has been applied to the growth of a thin gate oxide in the process to fabricate MOS dynamic RAMs, random access memories. At the same time the thin oxide layer was grown, a thick oxide layer was grown over a doped polysilicon layer as a result of concentration enhanced oxidation. The properties of the oxides dependent on the oxidation temperature rather than pressure. For example, oxide densities and the refractive index decreases, whereas chemical etch rate and residual stress increased with increasing temperature. The temperature and pressure ranges were 700 to 1000 degrees centigrade and approximately 5 to 10 atmospheric pressures respectively. So all the technical details which are required to understand the process of growing the thin oxide have been discussed with respect to the temperature, pressure and type of the values. Orientation dependence of oxidation rate is the next topic. क्या है इसमें, experiments have indicated that the oxidation kinetics are function of the crystal lithographic orientation of the silicon surface. This relationship is attributed to the orientation dependence of Ks and manifests itself in an orientation dependent linear rate constant. The linear rate constant is related to the interface reaction kinetics and depends on the rate at which silicon atoms are incorporated into the oxide. किस रेट से सिलिकॉन के एटम ऑक्साइड के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे उसकी काइनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए लीनियर रेट कांस्टेंट लिया जाता है. The dependence on the silicon surface atom concentration, which is orientation dependent, as might be expected, the parabolic rate constant B is independent of the silicon surface orientation. Silicon B is diffusion limited. Figure 5 shows oxide thickness. ये figure 5 में show किया गया. Oxide thickness as a function of oxidation time in water at 640 torr for both 111 and 100 oxidation silicon. ये जो 11 है 100 ने लैटिस कांस्टेंट बताते हैं. लैटिस स्ट्रक्चर जो होता है एक केमिकल का, एक किसी भी एटम का, वो बताते हैं, उसके प्लेनर को इंडिकेट करते हैं. ठीक है. This data along with that the oxygen yields a linear rate constants for 111 silicon that are 1.68 times for 100 silicon at corresponding temperatures. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 111 सिलिकॉन के लिए और 100 सिलिकॉन के लिए ये जो लाइन है, ये जो हॉलो लाइंस हैं वो किसके लिए है, 100 के लिए है, और ये जो डार्क लाइन है वो किसके लिए है, 111 के लिए. टेम्परेचर रेंज में किस किस तरीके से ऑक्साइड थिकनेस जो है वो डिफरेंट रहेगी. सेम टेम्परेचर रेंज में देख सकते हैं आपको ऑक्साइड थिकनेस डिफरेंट रहेगी अगर आपने अलग अलग लैटिस स्ट्रक्चर यूज किया है. यही सिर्फ बताने का मतलब है यहाँ पे. ठीक है. तो कैसे ओरिएंटेशन जो है डिपेंडेंस होता है किसका, ऑक्सीडेशन रेट का, वही बताने की कोशिश की गई है. ये ओरिएंटेशन है 111 100.
A model has been presented to explain how the linear oxidation rate of the silicon depends on the orientation of the silicon surface. According to this model, a direct reaction occurs between a water molecule in the silica and a silicon bond at the Si-SiO2 interface. At this interface, all the silicon atoms are partially bonded to the silicon atoms below and to oxygen atoms above. Okay. The orientation dependence of the oxidation rate comes from terms representing the activation energy of oxidation at the concentration of reaction sites. This concentration depends on the concentration of the silicon bonds available for reaction at a given time. The bond is directional, so its availability depends on its angle relative to the surface plane, its position with respect to the adjacent atom, and the water molecule size being such that when reacting with some angled silicon bonds, it can screen adjacent bonds from other water molecules. इतनी सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है. These and other geometric effects are called steric hindrances and result in linear oxidation rate being orientation dependent. फिगर 5 टेबल 5 में यह लिस्ट किया गया है कि किस किस तरीके से 100 के लिए, 311 के लिए, 11 के लिए, 100 के लिए अलग अलग यूनिट सेल, अलग अलग सिलिकॉन का एरिया, उसकी बॉन्डिंग किस किस तरीके से वेरी कर रही है, ये सब चीजों को रिलेटिव स्टडी जो है आपको यहाँ पे दिखाई गई है टेबल नंबर 5 में. ठीक है, मैं सीधे आ जाता हूँ कंक्लूजन पे. एक्सपेरिमेंट शो करता है कि द ऑक्सीडेशन रेट V इन स्टीम इज ऑर्डर्ड इन फॉलोइंग मैनर. ये 100 ग्रेटर होगा किससे? 311 से, और वो ग्रेटर होगा किससे? 11 से. हाईएस्ट क्या है? 110 with a slower rate predicted for the 100 orientation. Additional measurements in the steam show the following oxidation rate sequence. सबसे ज्यादा हाईएस्ट 111 का, फिर 110 का, फिर 311 का, फिर 100 का. तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में जो वेलोसिटी है, ग्रोथ है, किस किस तरीके से वेरी की गई है, इसके बारे में ये डिपेंडेंसी को जो है वो स्टडी किया गया है और आपको यहाँ पे बताया गया है कि ओरिएंटेशन चेंज कर देने से किस तरीके से ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है. तो आपको दो तीन एग्जांपल देके इसको बता देना है, ये एक्सपेरिमेंट्स के एग्जांपल्स को देके कि किस तरीके से ओरिएंटेशन के साथ वो चीज चेंज होती है. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग.